Now, ladies and gentlemen, to enlighten us about the path for digital transformation for small and medium enterprises, please put your hands together for the country head of ACCA Pakistan, Mr. Sajjeed Aslam. Thank you. Assalamu alaikum and very good morning. ERP, when we talk about in a finance profession, so if I go back to 90s or like mid 90s when we were under training, so बहुत बड़ा ख्वाब होता था कि finance भी करना है और SAP भी सीखना है और Oracle भी सीखना है और ERP भी करना है. And then we came to the real life. I got a chance for implementation across the world. SAP की implementation थी Nestle के साथ और multiple countries में वो implementation की, and then the learning was very, very different. It's not about ERP. It's never been about the system. It's always different. So important thing is to really understand the fundamental and the basics why a business should or should not need an ERP. And if they need an ERP, at what size? एक बहुत बड़ी मिथ होती थी हमारी फाइनेंस में भी इनिशियली कि ERP लगाने से कॉस्ट कम हो जाती है. ये नहीं होता और ERP लगाने से हमेशा कॉस्ट बढ़ती है, बट वैल्यू ज़्यादा डिलीवर हो सकती है if we choose to do so. So this is the concept which we will be discussing. Okay, thank you. So I have got some slides. I'll just take you through those. My name is Sajjeed Aslam. I'm heading ACCA in Pakistan. ACCA is a global professional accounting body which is operating right now in almost 180 countries. And just going back to a little bit around the history, it's 117 years old organization. It started somewhere in 1904 by challenging the status quo. यूरोप में उस वक्त ख़वातीन को वोट का राइट नहीं था जब ACCA स्टार्ट हुआ, and they said everybody should be included and it has to have a very inclusive approach. और 1909 में ACCA के पास खातून मेंबर थी. ये वो टाइम था जब अकाउंटिंग प्रोफेशन में सिर्फ वो लोग आ सकते थे जो बहुत एलिटिस्ट ग्रुप होता था और who can afford that, and it was a very tough and expensive education. And ACCA challenged that status quo, and for last 117 years we are maintaining that history. It's an open access, but there is a restriction. You have to have a competencies to become an ACCA members. It's 821 right now. If we look at the current stats, it's 821,000 people who are either they have completed the journey or they are completing their journey. There are 10,000 plus practicing firms across the globe which are working in a different field, from audit, account to advisory to tax to transaction management to ERP consulting. There are 114 education partners globally with which we are working, and they are feeding in a lot of research and learning, and we are partnering with them, and there's exchange programs as well. People can come from one education system to other. And the presence is almost 180 countries. Now, what does it mean? It brings us to the level where we can provide answers to some of the questions which are raised today, and we can prepare people for tomorrow, and that comes through the professional insight. And if you look at the ACCA professional insight, we are not talking about the technical insights, we are not talking about the compliances, laws, and standards. We are talking about smart cities, how it's going to impact the overall society, business impact क्या आएगा, कैसे चीज़ें change होगी, Generation Z का buying behavior क्या है, what does it mean for business? So it's way beyond the regular finance and technical professional insight. It goes beyond that. जो हमारी इस वक्त 117 साल की हिस्ट्री है, जो हमारी प्रेजेंस है, 8,21,000 मेंबर्स हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, 114 ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है. That's all help us to put together these professional insight for our members and businesses. Now the question comes, what we have learned, how it's relevant for today. What we have learned, the digital transformation is not about technology. We have established that, and that's what ACCA has, and I have done it myself for 5-6 years across the industry, and we know that the digital transformation is not about the technology. It's all about disrupting business model. So you have to go back to fundamental why you need that technology. Unless until you answer that question, हम ERP लगा भी लेंगे वो हमें solution नहीं दे पाएगा.
जैसे अभी भी बात हो रही थी कस्टमर एक्सपीरियंस की, अगर हमें रीज़न ही नहीं पता कि इस सारे सिस्टम को लगाने के बाद व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस वी वांट टू जनरेट, और क्या कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी शुरू में भी रेज हुआ था कि आईटी की जो सर्विस डिलीवरी है उनके लिहाज से बहुत ऊपर होता है और कस्टमर एक्सपीरियंस चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो वो बहुत कंप्रोमाइज़ हो गया होता है क्योंकि हम एक चेंज प्रोसेस से गुजरते हैं। सजाद ने भी बात की ये एक जर्नी है, साकिब ने भी बात की कि देयर इज अ हिस्ट्री, वी हैव गॉन थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैनी टाइम एंड इट्स चेंज प्रोसेस। These transformations cannot be done unless until we get the fundamental right. Based on all the learnings, based on the data, based on the experiences which we have collected ourselves or myself and within ACCA, we feel that these are the key disruptors and there are certain key disruptions. So if we look at the disruptors, so we can look at the data, computing powers, we can talk about IoT, artificial intelligence, but the things which are being disrupted, those are the buying behavior, the access to information and the way people are using information, decision-making criteria if they are looking at the business, their social interaction methodologies, their responses and the validation process, the way they interact with your product and services, the language, the communication. अभी सजाद ने भी बात की कि अगर रोमन उर्दू है तो आप जितनी मर्जी अंग्रेजी ले आए भाई कस्टमर सर्व ही नहीं हो सकता क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही नहीं मैच करती। अगर वो इमोटिकॉन्स यूज़ कर रहा है या इमोजीज यूज़ कर रहा है और आप उससे फेमिलियर नहीं है तो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। Market access. So these are the disruptions which happen through all the technology advancement which we have seen over the period. And based on this, we feel as a ACCA, there is a model for SME to look at when they are looking at the digital transformation. The first part of that model is they have to literally think ahead. They have to literally rethink around the growth opportunity. What has disrupted? Can they really intervene in a social behaviors and they can create a business opportunity there? Does market access help them to grow? क्या उनकी growth aspiration है भी? हमने SME में एक बहुत बड़ी research की थी जहाँ पे बहुत दफ़ा एक conversation होती है कि SME के पास access to finance नहीं है, professional management नहीं है. The research came back, they don't have a vision, they don't want to grow. जिस दिन उन्होंने अपनी पसंद का घर और गाड़ी ले ली और कुछ plots ले लिए, they don't want to go national, they don't want to go regional. So अगर आप वहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे ग्रोथ एस्पिरेशंस ही नहीं है। देन बिजनेस मॉडल है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट एंड देन इट कम्स टू द कस्टमर सेगमेंट। यू लिटरली हैव टू बी इन बेड विद योर कस्टमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। उनकी सेगमेंटेशन है, B2B सर्विस है, B2C सर्विस है, B2B2C है, फिर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, सोशल डिजिटल क्या इंटरेक्शंस होंगी, दीज आर द क्रिटिकल क्वेश्चन। And then you have to look at the workplace. Before you look at the rest of the automation, सबसे पहले आपने अपनी workplace, अपने talent को देखना है कि जो resources आपके पास हैं, are they familiar with that? क्या वो email apps, आपके collaboration tool, MS Teams वो चला लेंगे? वो customer से किस तरह interact कर रहे होंगे? जो data अगर आपकी website से आ रहा है या आपके system से निकल रहा है, are they literally able to read that? So आपका even Microsoft Office, fundamental, PowerPoint, Word, these are the things which need to be implemented. फिर टैलेंट है और सप्लाई चेन, सो वी हैव टू लुक एट द वैल्यू चेन। सेकेंड पार्ट, स्टार्ट स्मॉल, डोंट गो बिग। मारिया बी की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, एक पीस मिल इम्प्लीमेंटेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की। साकिब ने भी जो एग्जांपल दी थी, इट हैपन्स ओवर द टाइम, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सो थिंक अहेड, rethink the entire business model if you are thinking in a digital transformation and take small steps first. Workplace tools introduce करवाएं, ईमेल्स, कोलैबोरेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग लेके आएँ, बेसिक ऑर्डर फुलफिलमेंट लेके आएँ जिसमें फोरकास्टिंग का प्रोसेस, ये एज अ प्रोसेस चाहिए आपको बिफोर यू ऑटोमेट दैट। देन वी टॉक अबाउट द बेसिक कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन टूल्स। बेसिक CRM क्या होगा? क्या कस्टमर का डाटा एग्जिस्ट करता है आपके पास? डू वी रियली नो हु द कस्टमर इज? उसको कॉन्टैक्ट क्या करना है? उसकी इन्फॉर्मेशन वैलिडेटेड है? सो बेसिक कस्टमर मैनेजमेंट और एक्विजिशन और रिटेंशन के टूल जो होते हैं वो चाहे एक्सेल पे हों, चाहे आपके एक फंडामेंटल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे है, बट यू नीड द प्रोसेस टू रियली रिकॉर्ड दैट। और ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप कैप्चर करते हैं डाटा और प्रिजर्व करते हैं डाटा बिकॉज यू आर गेटिंग रेडी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जहाँ पे आप स्केल करते हैं। तो इट्स थिंक अहेड, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट।
एंड स्केलिंग के स्टेज पे आपको क्लाउड बेस्ड ERP हो सकता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप आपने कंसिडर करनी है, टैलेंट डेवलपमेंट एंड रिटेंशन हो। खाली ERP लगाने से काम नहीं बनेगा, वो जो टैलेंट आपको चाहिए उसको डेवलप भी करना है और रिटेन भी करना है, क्योंकि सबसे पहले वही फ्रस्ट्रेट होता है उस पूरे जर्नी में। फिर डैशबोर्ड है, डाटा की गवर्नेंस है, डाटा की इवन दैट लेवल ऑफ गवर्नेंस कि आपने कैपिटल में कस्टमर का नाम लिखना है, स्मॉल में लिखना है या प्रॉपर केस में लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, दीज आर द मैटर ऑफ डाटा गवर्नेंस। फिर प्रोसेसेस की इंटेग्रिटी क्या है, क्या वो चीज़ें रियली डिलीवर हो रही हैं, आपके डैशबोर्ड में नज़र आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, डू यू हैव अ बेंचमार्क टू कंपेयर विद। एंड देन मिनिमम कैपेबिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको CRM चाहिए, सेल्स ऑर्डर्स का प्रोसेसिंग चाहिए, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, HR, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिपेंड आप किस इंडस्ट्री में है। एंड दैट्स वेयर यू प्रोसेस फास्ट एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, एंड दैट्स प्रोवाइड यू द टाइमली एंड accurate information to the right person to make those decisions. So अगर SME का रोड मैप मैं ACCA के प्लेटफॉर्म से देखूं तो हमारी based on all the research and learning, this is the smallest way to look at that, how SME should be looking at the ERP or a digital transformation, और उसके पहले के जो preparation के phases हैं, if those are not ready and they jump on the ERP implementation, there is a likelihood it would be a cost and it will never be able to deliver the value. So just at the end, what I would suggest, think ahead, look from a business model perspective. Business is more important than the ERP. You have to understand the business requirement and the customer particularly, what are their behaviors and how they are interacting with the business. Start small, don't try to go with a big bang, and then scale it. And the scale should help you to really create that value. So I think, I hope it gives you a certain background based on the information or the research we have, and I'll definitely invite you to look at the ACCA Professional Insight. वहाँ पे आपको बहुत से business cases में मिलेंगे, and it's a free of cost professional insight. ACCA हर साल 20-25 million pounds उस पे spend करता है, but that's available free of cost. उसमें technology की side भी है, उसमें governance भी है, उसमें global economic structures भी हैं, trends भी हैं. So it's a good piece of information. Last 12 months में 30 pieces ACC ने produce किए हैं across the different sectors. I hope you will enjoy that, and it will help SME as a free resource when they are trying to see the future. तो वहाँ पे business model of the future क्या है, उसमें एक बड़ी अच्छी research business model of the future पे भी है, जो technology और platform based business के fundamentals बता रही है, and it has nothing to do, it's not like वो एक कुछ finance related information नहीं होती, it's basically a business leaders और उनकी directions, opinion और बहुत सा data उसमें available होता है. So I hope that give you a little bit perspective around the digital transformation from an ACCA perspective, how we see a roadmap for SME. So I hope you will enjoy the conference, and we are available if you have to ask any question or any further thing you want to discuss, I'll be around. Thank you very much.